What happened after that? Meanwhile, Mrs. Pumphrey continued ringing regularly to Mr. Heroid. She asked various questions about Tricky, but the narrator told that her dog was out of danger. So Mrs. Pumphrey started to bring down fresh egg to build up Tricky's strength. The narrator began giving Tricky wine because Mrs. Pumphrey started sending wine. At that time, Mr. Heroid was not able to believe that Mrs. Pumphrey actually wanted them to give wine to Tricky. They shared it amongst themselves. They didn't give that wine actually to that Tricky. But the staff, means whoever is with Mr. Heroid in the surgery in the hospital, they and Mr. Heroid, they shared that wine and they have themselves. So some days Mr. Heroid used to feel very happy as he would start his day with extra egg, and then he would have few glasses of wine in the afternoon and then ending the day with wine in the evening, because all of the things that were being sent for Tricky, Mr. Heroid was really tempted to keep him as a परमानेंट गेस्ट एट दी सर्जरी. ठीक है, जो भी चीज़ें मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के लिए भेजती थी वो एक्चुअली में उसका कौन ज़्यादा यूटिलाइज़ करता था? मिस्टर हेरॉइड और उनके साथ के जितने भी लोग थे सर्जरी में वो. ठीक है, उन्होंने एग्स भेजे तो उन्होंने एग्स भी यूटिलाइज़ किए. उन्होंने वाइन भेजी उसका ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, तो उन्होंने वो भी यूज़ किया. सो व्हाट ही सीरियसली वांट कि उसको वो एज अ परमानेंट गेस्ट जो है सर्जरी में रखें. ही रियली वांटेड दैट ट्रिकी शुड स्टे विद देम फॉर एवर, बट देन ही रियलाइज दैट मिसेस पम्फ्री, हु वाज लाइक अ मदर टू ट्रिकी, वाज रियली सफरिंग एंड रियली वांटेड ट्रिकी टू कम बैक सून. So after fortnight, means after a period of 15 days, after 15 days, Tricky was ready to go back home, and Mr. Heroid called up Mrs. Pumphrey to come to pick him. Within a few minutes, a long black car came outside home. ठीक है, सो कुछ टाइम बाद जो है मिसेस पम्फ्री आ जाती हैं, तो वो देखते हैं कि एक काफ़ी लंबी बड़ी गाड़ी जो है वो आई है और उसमें मिसेस पम्फ्री होती हैं. So now Mr. Heroid called up Mrs. Pumphrey to come to pick him up. Within a few minutes, a long black car came outside. When the chauffeur opened the door, Mrs. Pumphrey was sitting inside, really nervous and well excited also. So she was asking with a nervousness in her voice that was Tricky really better, to which the doctor replied positively. Then Mr. Heroid went inside to get Tricky. Okay, so उनका जो reaction था वो क्या था कि ओ मिस्टर हेरोइड, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर. सो ये मिसेस पम्फ्री ने कहा था मिस्टर हेरोइड से, तो मिस्टर हेरोइड ने रिप्लाई किया, येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम. शॉफर कहते हैं पर्सन जो कि एम्प्लॉयड किया जाता है टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार. ओके, जिसको हायर किया जाता है फॉर ड्राइविंग अ प्राइवेट और प्राइवेट कार. ओके, सो ही इज़ द शॉफर. And fetch means go for and then bring back someone or something for someone. So उन्होंने कहा कि नहीं, आपके उतरने की कोई इतनी नीड नहीं है और मैं जाता हूँ, मैं ट्रिकी को लेकर आता हूँ. तो जब मिस्टर हेरोइड जाते हैं गार्डन एरिया में, ठीक है, behind the house he saw all dogs moving around in the garden and Tricky was sitting between them. He had recovered wonderfully into 2 weeks. He was looking much healthier, playing with the other dogs, and his chest was touching the ground. He had become a good muscular dog within 2 weeks. When Mr. Heroid took Tricky in front to the front of a house, he saw the chauffeur was still holding the door of the car, and as soon as Tricky saw his mother like mistress, he was overjoyed. He ran away and jumped into the lap of Mrs. Pumphrey and started licking her face, barking in excitement. While all this was happening, the chauffeur and Mr. Heroid got all his stuff out of the car, which he had not been used during the treatment in the last 14 days. So when Mrs. Pumphrey was leaving, she leaned out of the window and said to Mr. Heroid with tears of joy in her eyes that she could not thank him enough for what he had done. So this is the triumph of surgery, mean that the treatment that was given to Tricky has been successful. और नरेटर ने ड्राइवर की जो हेल्प की थी वो ट्रिकी का वापस सारा सामान रखने के लिए, कौन सा सामान था जो ट्रिकी ने पास्ट 14 डेज़ में यूज़ नहीं किया था, उसका बेड्स, टॉयज़, कुशन्स, कोट्स, बॉल्स
और ये सब चीज़ें उसने यूज़ नहीं की थी, ठीक है। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, टेयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, शी टोल्ड दैट द नरेटर दैट इट वॉज अ टाइम फॉर सर्जरी। क्योंकि वो पास्ट जो फोर्टनाइट का पीरियड था, 15 डेज़ का पीरियड था, उसमें वो बाकी डॉग्स के साथ उसकी इतनी अच्छी कंपनी हो गई थी कि वो उन्हीं के साथ सब कुछ शेयर करता था, ठीक है। उसको इन सब चीज़ों की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं और वो बिल्कुल फिट एंड हेल्दी हो गया। सो दिस वॉज द चैप्टर, होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल।